हेलो भाई, कैसे हो आप लोग। गर्मी दिन ब दिन बढ़ती जा रही है और इसका असर सिर्फ इंसानों पर नहीं बल्कि हमारे पशु और मवेशियों पर भी पड़ रहा है। इसी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन लेकर आज हम आए हैं। आज के इस वीडियो में हम एक पुराने ख़राब पड़े आरओ वाटर प्यूरीफायर का यूज़ करके एक ऑटोमेटिक फोगर किट बनाने वाले हैं। इस फोगर सिस्टम को आप टीन शेड या किसी भी बंद जगह पर इंस्टॉल कर सकते हो, जिससे गर्मी के दिनों में पशु और मवेशियों को ठंडी राहत मिलेगी। और ये सिस्टम फुल्ली ऑटोमेटिक होगा, जो टाइमर के हिसाब से ऑन ऑफ होगा। इसको बार बार हमें ऑन ऑफ करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो चलिए शुरू करते हैं। All this time, I've been holding on so tight, 'cause all that I do was easy to use. So call my time,
तो भाई हमारा फाइनली टाइमर बन के रेडी है। इसको अच्छे से प्रोग्राम कर दिया है। इसके ऊपर हमने इंडिकेटर स्टिकर भी लगा दिया है कि कौन सा बटन, कौन सा इंडिकेटर किस काम किस काम आएगा। और इसके पीछे हमने जो आरओ के अंदर से हमारी पावर सप्लाई निकली थी, इसके ऊपर एक कवर था पावर सप्लाई होल्ड करने के लिए, उसी को एक स्क्रू और डबल साइडेड टेप की हेल्प से इसके पीछे लगा दिया है। और इसी को हम पावर सप्लाई के ऊपर लगा देंगे और ये हमारा कंप्लीट रेडी है। लेकिन इसमें एक चीज़ है, इसमें आप 4 वायर जो देख रहे हो उनमें से जो 2 वायर हैं उसमें से एक तरफ से 24 वोल्ट आएगा और दूसरी तरफ से पंप में चला जाएगा, और बाकी जो पंप का नेगेटिव है वो 24 वोल्ट से जो नेगेटिव आएगा उसमें चला जाएगा। बाकी जो 2 वायर आप देख रहे हो ये भी 24 वोल्ट के हैं। लेकिन इन वायर में या फिर इस इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम में हम सीधा 24 वोल्ट देने से पहले एक 10 एम्पेयर का फ्यूज़ लगाना चाहते हैं कि कभी अगर वोल्टेज फ्लक्चुएट होती है तो हमारा ये जो कंप्यूटर है वो डेड होने से बच जाएगा। तो हम बस ये काम करने वाले, वो जो कि हम इसमें फिटिंग करते टाइम कर देंगे, वो को बड़ा इशू नहीं है। और हमारा पाइप भी है जो है 10 मीटर का, वो हमने ऑर्डर किया था, वो भी आ गया। इन सब का लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। और 5 नोजल हमारे पास पहले से थे और 5 नोजल और हमने एक्स्ट्रा मंगवा लिए हैं, तो इससे अच्छे से हमारा काम हो पाएगा। तो इनको हम साइट पे जाके सेट करेंगे, जिसकी वीडियो आप आगे देख पाओगे इसी में। और बाकी जो ये है इसको हम अभी ओके कर लेते हैं सारा, इसकी फिटिंग करके, इसके वायरिंग करके।